So, welcome to the today's lecture. It's a very first lecture about thermal power plant. So, thermal power plant is very important if we talk about the India's power system, or we can say the power installed capacity. But to know more about the thermal power plant, we first understand what are the different components of the thermal power plant, what are the different categories of instruments which are there, and before that, why we should go for thermal power plant. Okay, so first of all, if we talk about the thermal power plant, then it's like a conversion mechanism. You can say. I hope I'm audible to you all properly. Just type yes in the chat box so that I can understand. I hope I'm audible properly, right? Okay. So now if we talk about the thermal power plant, as you see, it's a very huge structure and it is used for generating electricity. Now the main source of power, or we can say the energy in the thermal power plant, is that the from the chemical energy which is stored in the form of coal or a fossil fuel. Now if we talk about the coal and fossil fuels, that means the heat is involved. So you agree that if the coal or any chemical fuel, if we are burning it, and then definitely heat is going to produce, and how efficiently we are going to manage that heat, and how efficiently we are going to convert that heat into electricity, that is what we are going to learn today. How the thermal power plant works, what are the advantages, disadvantages, how the thermal power plant is having its components, what are the different equipments, how the functions which are done by these equipments, and different types of components. Those components are there, though those components are also having their subtypes. Say for example, if we are having a boiler as a part or a component of a thermal power plant, then boiler also has different varieties of types. Okay, so which type of boiler is useful for us, which type of boiler is suitable for us, these all things we are going to learn. Okay, then we are also going to learn about the very critical and we can say the equipments which are improving the efficiency of a boiler. So those are called as a superheaters, economizers, reheaters, air preheaters, and other many components of thermal power plant. Now, as you know that burning of a fossil fuel or burning of a chemical, or we can say the coal most prominently, it is going to lead to generate what? One, definitely that is a heat, but second thing which is that particular burning process is generating is called as a smoke or a flue gases. So smoke and a flue gases are basically exhausted into the atmosphere, and if atmosphere is getting polluted, then it is not going to helpful for us. And for that purpose, this particular thermal power plant should have the mechanism by which it will be reducing, or it will be controlling the amount of flue gases, or we can say the amount of adverse effect of these flue gases or a smoke on the atmosphere. Now, as you know that we have seen first part, that is burning of fossil fuel and generating heat, converting that heat into electricity. But apart from that, we also seen that smoke and flue gases are generated, and then we want to go into the next problem or next point, that is called as a generation of ash. Say for example, after burning the coal, one thing which is releasing, which is helpful for us, is a heat, but second one, that is smoke or a flue gas, is not helpful for us, and third thing which is coming up, that is called as a ash. And also ash has a two types, one is called as a wet ash and one is called as a fly ash. तो these two ash जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट हमें आज सीखना है किस तरह से हम इसको हैंडल करते हैं, किस तरह से इसका डिस्पोजल करते हैं, और ये सारी चीजें आपको थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है. ओके, नाउ समटाइम्स you observe that there are some diesel generator plants, or we can say the DG set. Those DG sets are limited with the number of power, or we can say the number of kilovolt ampere rating. So kVA rating of a transformer which is associated with the generating station is also different.
And if we talk about the transformer, then if transformer is different, big capacity, then the generator will also has a different capacity, different features. So one feature which we can say about the generator is that as generator is a electrical machine, so electrical machine is going to generate electricity by using the prime mover. We call it as a prime mover because it is rotating the electrical generator. So once that particular generator is being rotated, then it is converting electricity. But during that process, maybe that generator is experiencing the heating process, or there is an internal heat which is produced inside the generator. Now we have to cool that. Second, there will be a very high amount of voltages which are leading to the insulation problem. So we need an insulation in our generator. So ये point आपको समझ में आया generator के बारे में? So these all the points we are going to cover in today's lecture. Okay? So अभी हम लोग बात करते हैं हमारे very first point की, that whenever we are installing this thermal power plant, okay, whenever we are installing this thermal power plant, you know that there are some locations where we can say that thermal power plant can be installed easily, or it will be efficient, or it will be having a more advantages. So we have to select the site, due to which you can get a more efficient operation of a thermal power plant. So now I am asking you one question. Be ready in the chat box. If I want to invest my money and install a thermal power plant, what will be the probable location you think those locations will be suitable for thermal power plant? Or if you want to select a site for a thermal power plant, what exactly you are looking forward? Just type the answer in the chat box. Okay. So if we talk about the thermal power plant, we can install the thermal power plant where we can get the most prominent fuel, that is our coal. So if you are getting the coal in a very abundant quantity, then we can say that this place is very useful for our thermal power plant. So that is the very first point. Second point, as you say that it is a working on converting the water into steam. So we required a large amount of water. Maybe it is required for the cooling purpose, or maybe it is required for the purpose of converting it into the steam. So we required a large amount of water. Then there should be an ample amount of space, or we can say that ample amount of arrangement for our ash disposal. So if you are able to get some space or some mechanism by which we are going to dispose of the ash which is generated, then definitely this particular space will be helpful for us. Then if we are installing such a huge plant, then we are not in a position to just say कि हमारे पास इतनी ही जगह है, or it may not be a shortage of available land. So space requirement is much more, and the land should be having in a good quantity, so that we will be having the expansion plans in our mind, so that we can do that. So that is the third, or we can say the fourth requirement. Then most important requirement is that whenever a thermal power plant is being installed, the huge amount of machinery has to be taken from the machine manufacturer location to the thermal power plant location. Say for example, how many of you know about the big machinery manufacturing companies like Siemens, ABB, right? BHEL, 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 and Crompton Greaves, right? So these are the one of the major companies which are manufacturing the equipments which are required in thermal power plant. Apart from this, also Kirloskar, or the companies who are manufacturing pumps and motors, different piping mechanism, okay, then some storage tank mechanism. These all equipments are needed in a thermal power plant. So most important thing we want is that the transportation facility. So transportation facility is related with your raw material, related with your machinery, and then most important is that it is related with your
manpower. So if you are having a residential area which is away from the thermal power plant, then it's very must that a company who is installing or who is constructing this thermal power plant should have a residential colony, okay, where people can stay and people will be easily transported to the thermal power plant location. Okay, so this is how we are going to the next level, that is what another things which are required. Okay, so next thing which we can say, that if this kind of power plant is using coal as a raw material and they are burning the coal, then there is a chances that this smoke and these flue gases will be dangerous for the human beings if the human being is surrounded by the power plant 24 by 7. And for that purpose, the power plant location should be away from the populated area, or we can say the densely populated area. जितना कम जगह पे लोग रह रहे हैं उसके आजू बाजू में, उतना अच्छा है, because of which the people who are living nearby thermal power plant may not experience any kind of fatality, और उनके जान को कोई भी जोखिम नहीं होगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप सो. जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन गो अहेड. नाउ एज यू से आपके माइंड में एक सवाल आएगा, एंड दैट क्वेश्चन इज, सर अगर हमने पॉपुलेटेड एरिया से दूर थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल किया तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया है या थर्मल पावर प्लांट ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है तो उसे खरीदेगा कौन? हु इज गोइंग टू buy our electricity? And for that purpose we can keep another point in our mind, that the thermal power station should be near to the load center. And if the thermal power plant is near to the load center, then it will be creating a good amount of फाइनेंशियल सक्सेस, और यू कैन से द फाइनेंशियल प्रॉफिट. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है. अभी हम लोग देखते हैं, इफ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द थर्मल पावर प्लांट, इफ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द thermal power plant, what are the different advantages over the other types of power plant? So before going to that, what are the different other types of power plant? Just type it in the chat box. So as we can see, the other types of power plant are, yes, hydro power plant, nuclear power plant, diesel power plant, yes. Then also we have gas generator, gas turbine power plant. Then we have some non-conventional power plants like solar power plant, wind power plant. Then we have biomass, methanol, tidal power plant, right? So these all are the different, or hybrid power station, yes. So these all are the different types of power generating plants. But if we are comparing these all and then we are trying to decide whether we should install a thermal power plant or not, then we can say that the thermal power plant has some advantages. So what are those advantages? So first of all, if we talk about the initial cost, okay. So if we are talking about the initial cost, then we can say that the thermal power plant has a less amount of requirement of initial cost if we are comparing it with the hydro power plant. अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रो पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल अ डैम, and to install a dam we required to relocate the people who will be coming under the water catchment area. Now that particular cost is tremendously high with compared to the installation of thermal power plant. So we can say this is a very first advantage. Second, if we talk about again comparison with the hydropower plant, because most of the people think hydropower plant is very cost effective plant, उसमें कुछ पैसा नहीं है, बारिश आता है, डैम फिल होता है, रिजर्वायर में पानी भर जाता है, देन नीचे आके वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी से आपका जनरेटर चलता है. बट वो डैम वहां पे ऊपर इंस्टॉल करने के लिए, वो डैम वहां पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंसेस, बहुत सारा टाइम, एनर्जी, इफोर्ट्स आपको क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है. और उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी मिलती है
it is, though it looks like a free or we can say very less costly, but it involves a cost during the initial time. Now अगर हम उसके space की requirement को देखते हैं, say for example a hydro power station has a space requirement for its dam, or we can call it as a reservoir, then penstoke, those are the pipes which are coming down, and the turbine and DG set and the generator set, and then the tail rest where the water is going out from the hydro plant. ये सारी जगह को अगर हमने कैलकुलेट किया, the amount of space which is required by a hydro power station is way much larger than comparing it with the coal or we can say the thermal power plant. So एक एडवांटेज क्या है थर्मल पावर प्लांट का कि हाइड्रो पावर स्टेशन के कंपैरिजन में इसे कम जगह लगती है. It requires a less space as compared to the hydro power station. Now going to the next advantage, I would like to say that the fuel cost, okay, the fuel cost which is required, that is for a coal, and if we are comparing it with the say for example the coal has a cost, some x amount of cost per kilograms or per 100 kg, then that particular cost is basically reduced, or we can say it is basically way back, it is very cheap if we are comparing it with the cost of the gas power plant. तो गैस पावर प्लांट का मेन फ्यूल है आपका गैस. गैस के बिना वो प्लांट चलेगा नहीं. So definitely you require to use a natural gas or a gas which is useful for the gas turbine. But to procure that gas, you require to spend a large amount of money. Okay, and for that purpose, we can say the cost which is involved in the coal fuel or a thermal power plant is very much less than comparing it with the gas power station. Now, apart from this, we also one advantage that thermal power plant we can install anywhere. Maybe yes, we require the space which is near to the coal mines, we require a space near to the river or a sea, but yes, we can install the thermal power plant anywhere because we can transport the coal. Okay, so if the load center is nearby, we can transport the coal by any means, like from the roadways, or we can transport it by the seaways. Okay, so कोई भी तरीके से हम कोल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, and after doing that transportation we can burn that coal and generate the electricity. Now moving to the next is that if we consider all the space, we consider all the equipments, we consider all the devices which are involved, and the fuel quantity we considered, ये सारे कंसिडरेशन करने के बावजूद भी हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत ज्यादा आपको पावर जनरेट करके दे सकता है. ए स्मॉल यूनिट फ्रॉम 100 मेगावाट ऑफ पावर टू मैक्सिमम यूनिट व्हिच इज इंस्टॉल्ड नाउअडेज is of 800 or 850 megawatt installation in India. Okay, so यहाँ तक सबको clear है? So whatever you have learned today, just type those points in the chat box so that I can understand what are the points you have remember. Okay, go ahead. Why so many less response? इतना ही पढ़ाया मैंने आपको, या बाकी लोग को टाइपिंग करना नहीं आ रहा है. 46 स्टूडेंट्स है, मिनिमम 46 रिप्लाई चाहिए मुझे. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिसएडवांटेज. अभी थर्मल पावर प्लांट के डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको क्या लगता है? वेरी वेरी फर्स्ट, दैट एवरी टाइम वी हैव टू बर्न द फ्यूल. एवरी टाइम वी हैव टू बर्न द फ्यूल, इट मींस एवरी टाइम वी हैव टू स्पेंड फॉर द कोल. कोल के लिए हर बार खर्चा करना पड़ेगा आपको, राइट? सो कोल के लिए अगर खर्चा करना है एंड उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अगर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके थर्मल पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा है. सेम अगर एग्जांपल लेंगे आप, तो आपके पास एक व्हीकल है जो 1 लीटर पेट्रोल में समझो 100 किलोमीटर जाती है, और एक दूसरी व्हीकल है जो 1 लीटर पेट्रोल में समझो 20 किलोमीटर जाती है. तो 20 किलोमीटर जाने वाली जो व्हीकल है, डेफिनेटली इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई. तो आपको 100 किलोमीटर जाने के लिए वो दूसरे टाइप के व्हीकल में 500 रुपीज का पेट्रोल जो है वो
फिल करना पड़ेगा, या 5 लीटर का जो पेट्रोल है वो फिल करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉस्ट, अगेन एक मेजर कॉस्ट है जो इन्वॉल्व है, एंड दैट कॉस्ट इज ऑफ योर हेल्थ एंड योर नेचर। नेचर को ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है, and it has a costly in terms of the pollution which is created। जो थर्मल पावर प्लांट पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो पॉल्यूशन काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्रिएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से दैट the thermal power plant is having this kind of disadvantage where the smoke, flue gases, ash, this kind of all type of pollution is created, and that's why we have to take care of the thermal power plant. Now the equipments are so huge, as you seen here, equipments are so huge, they are very complicated, like fuel, air supply, turbine, condenser, feed water pump, then makeup water pump, warm water pump, cooling tower, cooled water, electric generator. These all are the equipments which are there, which are very much costly from the maintenance point of view। अगर maintenance करने जाए हम ये equipments का, तो it becomes very much costly। Okay, so this is another disadvantage you can say। Now if you talk about the boiler, turbine, then again pumps and the control room operations, it is very much needed that the people should have a proper knowledge, proper skills, so that they can work in a thermal power plant। कोई भी normal wireman, कोई भी normal इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, सुपरवाइजर थर्मल पावर प्लांट में काम जाके तुरंत नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्लांट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। आप में से कोई भी थर्मल पावर प्लांट में काम करता है या कर चुका है, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो आपको पता होगा कि जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, आपको पहले काफी रिगरस 6 महीने का, 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में, आपको जो काम करना है उसके बारे में पता चले। क्यों? क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई भी स्मॉल मिस्टेक होता है, अगर कोई भी एक पंप समझो बंद हो गया और उसको आपको मेंटेन करना है, और आप अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो बिकॉज ऑफ दैट वन स्मॉल सिंगल पंप आपका पूरा प्लांट जो है वो शट डाउन हो सकता है। अभी यहाँ पे मजे की बात ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पंप्स होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके स्टैंड बाय इक्विपमेंट भी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टैंड बाय इक्विपमेंट? मतलब एक काम करने वाला जो डिवाइस है या इक्विपमेंट है, उसके जैसा दूसरा एक और इक्विपमेंट वहां पे ऑलरेडी तैयार रहता है। तो अगर एक के ऊपर आप मेंटेनेंस का काम करेंगे, तो दूसरा आपका प्लांट का लोड जो है वो संभाल सकता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आई वांट एवरीवन टू बी रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स, ओके, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर रियली लिसनिंग और व्हाट यू आर डूइंग। ओके, गुड। सो अभी हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे, विच इज वेरी प्रोमिनेंटली नोन एज अ schematic diagram of the power plant। okay, so this diagram you must draw in your notebook। अभी आप ऐसा मत सोचो कि हमारी एग्जाम ऑनलाइन है या theoretical है, आपको लिखने का प्रैक्टिस तो करना ही है। okay, so first of all you have to write down the first homework question, that is advantages and disadvantages of the thermal power plant। second, you have to write down the questions answer, that is a choice of site, how we are going to select the site for the thermal power plant। and third homework question is that draw the diagram of schematic diagram of thermal power plant, जो भी अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। एंड यस, यू ऑल आर अटेंडिंग दिस, यू आर अटेंटिव। तो अभी मैं आपको ये पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको अगर ये दिख नहीं रहा है, तो यू कैन जूम इट इन योर मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल करके भी ये पूरे डायग्राम को हॉरिजॉन्टली अच्छे से देख सकते हो। इवन विद द यूजिंग योर 2 फिंगर्स यू कैन जूम इन टू लर्न अबाउट इट मोर डिटेलली। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द स्कीमेटिक डायग्राम, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस another 3 important disadvantages
of thermal power plant. The one is that the starting time required is so much high. मतलब अगर आपने थर्मल पावर प्लांट को गलती से बंद कर दिया और आपको अगर लगता है कि हमें और एक बार उसको चालू करना है, तो वो ऐसे आपने जैसे बटन दबाया और ऊपर का फैन चालू हो गया, ऐसे नहीं होता है. इसको चालू होने में मिनिमम 6 से 8 घंटा लगता है इन द कोल्ड कंडीशन. ओके, अभी पूरा आपका जो प्लांट है उसको पहले ठंडा भी करना पड़ता है. मतलब बंद करने के बाद भी तुरंत बंद नहीं होता है, उसको कोल्ड मतलब कोल्ड कंडीशन में लेके आना पड़ता है. आफ्टर दैट व्हेन द प्लांट इज नॉट वर्किंग कंडीशन, उसका जो जनरेटर है, टरबाइन है, उसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोवाइड करके उसको रनिंग कंडीशन में रखा जाता है. कभी भी जनरेटर को या टरबाइन को ऐसा स्टॉप कंडीशन में हम नहीं रख सकते. जैसे अभी हमारे पास समझो फैन है, तो वो फैन को हम क्या कर सकते हैं, बंद होने के बाद उसको रोक के वैसे ही रखेंगे. ओके, बट टरबाइन एंड जनरेटर जो है आपके थर्मल पावर प्लांट का, उसे आपको टर्निंग गियर उसको बोलते हैं, टर्निंग गियर पे उसको रखना ही होता है, जिसकी वजह से आपके शाफ्ट का डिफॉर्मेशन ना हो. ओके, शाफ्ट का डिफॉर्मेशन मतलब क्या, अगर आपने वो काफी लंबा बहुत सारे टन का जो शाफ्ट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ शाफ्ट ऑफ अ टरबाइन एंड जनरेटर असेंबली, तो जैसे ही इसका खुद का ही वेट बहुत सारे टनों का है, 100 टन 200 टन जो भी है, तो वो उसके वेट से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. ओके, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन. और वो डिफॉर्मेशन ना हो इसके लिए उसको हमेशा रोलिंग या रोटेटिंग करके रखते हैं. ओके, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज में इन्वॉल्व है. तो हमने जैसे डिसएडवांटेज देखा, सबसे पहला डिसएडवांटेज देखा रनिंग कॉस्ट इज हाई. सेकेंड डिसएडवांटेज देखा, इट पॉल्यूट्स atmosphere very what we can say drastically. Then we also seen that maintenance cost is very high. Then we have seen that we required a very skilled manpower, and then we have seen that the starting time is very high. So we must have to start this thermal power plant 6 to 8 hours prior to our requirement. Okay, then if we talk about the efficiency, now ये जो आपका thermal power plant है, it works ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल. ये वर्ड आप आपके नोटबुक में नोट करके रखिए, रैंकाइन साइकिल पे ये काम करता है. और इसका जो ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी जो रहता है, इट्स वेरी 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 लो. मतलब अगर आपने 100 रुपए खर्चा किया, आपको 30 रुपए का सिर्फ सामान बाहर मिलेगा. मतलब अगर आपने 100 किलोग्राम का किलोग्राम एनर्जी को अगर से उसका यूनिट है, मेरे ख्याल से उसका यूनिट है किलोवाट पर केजी, ऐसा कुछ यूनिट है उसका, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी. तो कितने किलोवाट कितने केजी में बनेगा, मतलब 1 किलो अगर हमने 1 केजी ऑफ कोल इफ वी बर्न, तो हाउ मच किलोवाट एनर्जी वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. तो वो जो उसका रेशो है वो सिर्फ 30% के आसपास है, 20 से 30%. मतलब ये सबसे हम बोल सकते हैं ना, ऐसे कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं, कामचोर एम्प्लॉयज, वैसे टाइप का ये प्लांट है. बहुत ज्यादा लॉसेस है इसके अंदर. कैसे लॉसेस है, कहाँ पे लॉसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है. ओके, सो वी हैव सीन द वेरी फर्स्ट two topics of our syllabus: thermal power plant, how it works, what are the advantages, disadvantages, and where we can locate the thermal power plant. Okay, so this is it for the first lecture. Okay, so we are stopping here for our फर्स्ट लेक्चर. यहां तक सबको समझ में आया?